Now let's talk about JSON. So JSON basically एक data interchangeable format है, basically data exchange करने का format है. Very simple to use. There's one thing which is RESOI, इसको हम बाद में discuss करेंगे. But R stands for human readability, O stands for openness, S stands for simplicity, E stands for extensibility, and I stands for interoperability, which basically means that it is very human readable format, supports Unicode. It is very stable. It is versionless. ठीक है, which means इसका कोई version update नहीं होगा, and it's very simple to use. And it is also used in Ajax. So the way how it's used in Ajax, which is asynchronous JavaScript XML, is कि आपके पास कोई HTML होती है, आपके पास फिर कोई उसका कोई कोड होगा, and then you have your script. तो हम यहाँ पे अपनी JavaScript लिख रहे हैं, and in the script we're saying var data equals to, and then इसके आगे हम क्या लिख रहे होते हैं, JSON data, and then you're ending your script, and then you're ending your HTML. So that's how we're using this. JSON data basically ऊपर define हुआ हुआ JSON data, तो आप उसको यहाँ पे directly use कर रहे हैं. So you're not actually parsing it, you're just using the data like that, and you're storing your JSON data in this var variable, which is very easy to use. हम इसको HTML responses के अंदर भी use कर होते हैं. तो HTML responses के अंदर क्या होता है, आपके पास लिखते हैं response data equals to evaluate, and then you have a character, which is this bracket, plus response text, जो आपका जो भी response text आया इसमें, and then you're adding your closing bracket, and you're ending your this method of evaluate. So HTML का जो HTTP का जो भी response होता है, उसके लिए हम इसको ऐसे define कर रहे होते हैं. For your XML का HTTP request can be converted into JavaScript code like this. ठीक है? So two things, it is used in Ajax, and the second thing, it is used for XML HTTP request as well. ठीक है, जो आप basically उसको JavaScript code में convert कर सकते हैं. Okay, now let's move on. So JSON का format क्या होता है? JSON का format basically होता है, you start with a curly, end with a curly, and then you have your whatever key, and you have your values, right? So it's something similar to like keys are basically string, values can be struct, record, hash table, or an object. ठीक है, so values और जो होती हैं आपके पास, तो हम इसको ऐसे इनक्लोज करके, सॉरी, की को हमेशा हम ऐसे लिख रहे होते हैं. सो वी हैव फॉर एग्जांपल name, and then colon, and then this thing, and then you can write Mawson. So always in strings, and you have to add like a comma. I think you have to add, wait, let me see this so that I don't mess it up. 1 second. I'm just going to look at the format really quickly. Yeah, so you have to add a comma after each key and value. Okay, so you have key Mawson, and then you can set this value to 3, and then you can have a comma if you want. If you don't want, then you can remove it. Okay, so आपके पास JSON के अंदर 5 data types included होती हैं. ठीक है, string, boolean, number, which can be float numbers if you want. So string, boolean, numbers, objects and arrays. Objects को हम define कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे हमने key value pairs बता रहे थे, और arrays को define कर रहे होते हैं in brackets के साथ. Now arrays जब यूज़ होते हैं जब basically आपके पास indexing important होती है, और objects जब यूज़ होते हैं जब हमारे पास strings से हमें कोई चीज़ access करनी होती है. Okay, so now let's talk about Web 2.0 and JSON. So Web 2.0 को support करता है JSON, which basically means that you do not have to refresh the page whenever you want to do data transfer, right? Which basically means कि page replacement की ज़रूरत नहीं होती है. Now since आपका JavaScript का कोड और आपका क्या कहते हैं जो जावास्क्रिप्ट और जो वेब पेज है वो सेम डोमेन से ओरिजिनेट कर होता है. तो जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हमने ये बात की ना कि जेसन डेटा होता है, तो जेसन डेटा को आप आराम से उसके ऑब्जेक्ट को आराम से व्यू भी कर सकते हैं, और आप उसको
एक्सेस भी कर सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप आराम से उसको जेसन इंजेक्शंस भी कर सकते हैं, अगर वो अलाउ कर रहा है इन्फॉर्मेशन डालने के लिए तो आप जेसन इंजेक्शंस कर सकते हैं, या फिर दूसरी वेबसाइट से कुकीज़ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं जेसन की फ़ाइल्स, क्योंकि जेसन कैश हो रहा होता है आपके पास। सो इट्स वेरी डेंजरस। सो आपको इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा एज टू हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ विच वर रिमेनिंग, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की। इट्स नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ज़्यादातर हम बात कर रहे होते हैं डेटा ट्रांसफ़र की तो हम HTML की बात कर रहे होते हैं, HTML, या हम XML की बात कर रहे होते हैं, जो दोनों आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। बट जेसन आपके पास मार्कअप लैंग्वेज नहीं होती है। जनरलाइजेशन फॉर्मेट ये होता है कि इसका कोई अंडरलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, सो इट्स नॉट लाइक कि ये किसी और चीज़ से बेसिकली बना हुआ है, राइट। बिकॉज जैसे अंडरलाइन स्ट्रक्चर या इनविजिबल स्ट्रक्चर आपके पास जैसे हो सकता है क्लासेस हो सकती हैं, राइट। इसके अंदर कोई रिकरिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर कोई फंक्शंस नहीं है। डेटा इंटरचेंज होता है, बहुत लाइट वेट है, क्योंकि लैंग्वेज independent है, you can write in any language you want, and basically it could be used between between your server, your client, or amongst the peers. um, and it can represent any data structure, so trees हो गए, list हो गए, इनको आराम से आप replicate कर सकते हैं JSON के अंदर, and it's self documenting format which describes the structure itself. I mean, it's not that important at this point. So if you want to compare this JSON with XML, we can see it's going to say 5 data types, and whereas in XML you have element, attributes, attribute strings, you have declarations, entities, and what's or not. There's like a lot of stuff, and the list goes on. So that was, I think, everything related to JSON.